माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री कृष्णपाल जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची की क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के सामने सूचीबद्ध दस्तावेजों को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा। आइटम नंबर आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 3 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्री कौशल किशोर जी। जी सर। महोदय जी, मैं आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम माननीय सदस्य सूचीबद्ध कागजातों ये सदन है, प्लीज बैठिए। हिंदी व अंग्रेजी सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 5 महोदय भगवंत कुब्बा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज के संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 5 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कामकाज सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 महासचिव। Sir, I lay on the table a copy each, duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha, of the following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President since a report was last made to the House on the 20th July 2022. 1. The Indian Antarctic Bill 2022. 2. The Weapons of Mass Destruction and the Delivery Systems, Prohibition of Unlawful Activities Amendment Bill 2022. 3. The National Anti-Doping Bill 2022. 4. The Family Courts Amendment Bill 2022. And 5. The Central Universities Amendment Bill 2022. आइटम नंबर 7 श्री नायब सिंह जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में अपने नाम के सामने क्रमांक 7 पर यथा सूचीबद्ध श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति 2022-23 का 36वां और 37वां प्रतिवेदन हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 8 श्रीमती श्री के मोजी कनिमोजी जी। Sir, I beg to lay the action taken statements in Hindi and in English versions showing further follow-up action on recommendations contained in the action taken reports of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj as listed against my name in today's list of business. Thank you. Item number 9, Sri Dushan Singh ji. Rise to lay on the table the copy of the each of the 323rd report, 324th report, 325th report, 326th report, and 327th report on the Standing Committee on Transport, Tourism, and Culture, listed against my name in serial 9 into the list of business. Thank you. Item number 10, Dr. Mahesh Sharma ji. Sir, I beg to lay on the table of the following reports, Hindi and English, version of the Standing Committee on Health and Family Welfare. 137th report on vaccine development, distribution, management and mitigation of pandemic COVID-19. 138th report on medical devices, regulation and control. 139th report on cancer care plan and management, prevention, diagnosis, research and affordability of cancer treatment. 140th report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 134th report on demands for the grants of 2022 and 23 of the Department of Health and Family Welfare. 141st report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 135th report on demands for the grants of 2022-23 of the Department of Health Research, Family Ministry of Health. 142nd report on action taken by the government on the recommendations, observations contained in the 136th report on demands for the grants 2022-23 of the Ministry of Ayush. Item number 12, Sri Bhagwant Kubba ji. महोदय, मैं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के कार्यान्वित की वर्तमान स्थिति के संबंध में निम्नलिखित विवरण रखने के लिए उपस्थित हूं।
Item number 13, Shri Subhash Sarkar ji. Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council established under subsection 1 of Section 31 of the Institutes of Technology Act 1961, mentioned against the name of my colleague Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business. प्रश्न ये कि श्री सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। श्री आइटम नंबर 14 सुभाष सरकार जी। Honorable Speaker, sir, with your kind permission, I rise to move the motion of election of one member from amongst the members of the House to be a member of the Council of National Institute of Technology, Science, Education and Research, NITSER, mentioned against the name of my colleague, Cabinet Minister Sri Dharmendra Pradhan ji in today's revised list of business. प्रश्न ये कि सुभाष सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य पक्ष में हाँ गए, जो इसके विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। हाँ, आइटम नंबर 11 श्री के रघुराम राजू। Sir, I raise to lay on table a copy each of the following reports in English and Hindi of Standing Committee on Personal Public Grievances, Law and Justice. Number 1, 120th report on action taken on 110th report of the Committee on Pensioners' Grievances, Impact of Pension, Adalats and Centralized Pension Grievances, Redress and Monitoring System pertaining to the Department of Pension and Pensioners' Welfare. 121st report on action taken on 113th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Departments of Administrative Reforms and Public Grievances and Pension and Pensioners' Welfare. Number 3, 122nd report on action taken on 112th report of the Committee on Demand for Grants for the year 22-23 pertaining to the Department of Personnel and Training. And finally, number 4, 123rd report on action taken on 116th report of the Committee on Demand for Grants 22-23 pertaining to the Department of Justice. Thank you, sir. शून्यकाल। हाँ बताएं जी रंजन जी। हाँ